Good evening, students. In this video, we will discuss all the important topic of our environment chapter because in previous we have completed the most of the important part of hereditary and evolution chapter. Okay, because hereditary and evolution chapter is a very important chapter and it is also comes in the 12th class also because most of the marks percentage and most of the marks weightage are generally considered in this chapter. Okay, so you all have to clear all the things in hereditary and evolution. Okay, so before starting a new chapter, our environment, I am going to summarize all the topics in a very less time. Okay, in this chapter we have discussed two phases. फर्स्ट फेजेस में हमने हियरडिटरी पढ़ा, सेकंड फेजेस में हमने इवोल्यूशन पढ़ा. इन हियरडिटरी मटेरियल्स में हमने बहुत सारे जेनेटिक्स देखा, हमने वेरिएशन देखा, इनहेरिटेंस देखा, हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड. In this video we have also discussed that the law of different types of law has been given by Mendels ने उसमें तीन लॉ दिए. We have also discussed and three laws are very important because such type of laws are generally comes in the board exams also. Okay, law of dominance, law of segregation, okay, and law of independent assortment, all the things are very important, so you all have to revise again and again. Why? Because this questions are generally comes from 4 to 5 marks. Okay, after that we have also discussed the sex determinations. We have also discussed the human evolution, how the humans ancestors are generally changing from time to time, durations to duration. So many things we have discussed in hereditary and evolution chapter, but here we are going to start a new chapter, and that is the our environment of class 10th. Further, we have to discuss the meaning of environment. What do we know about the environment? ठीक है. So firstly we should know about the environment. The environment includes our physical surrounding. Environments में बहुत सारी physical surroundings होती है. That may be air, mostly एयर मीन्स एटमॉस्फेयर. वी नो दैट वाटर बॉडीज होती है हमारे एनवायरनमेंट में. ठीक है, सॉइल होता है, लैंड होता है. ठीक है, एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, सच एज प्लांट्स होते हैं, उनमें प्लांट्स एंड एनिमल्स भी होते हैं, एंड मोस्टली ह्यूमन बींग्स भी होते हैं. ठीक है, सो वंस अगेन environment includes all the physicals surrounding like air means atmosphere, वाटर बॉडीज होती है, सॉइल होते हैं, एंड इंक्लूडिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स and microorganism also like bacteria and fungi. Okay, microorganism like bacteria and fungi, we know that these are generally called as microbes. Okay, so these are generally called as microbes. Why they are called as microbes? Because they are very minute in nature and they cannot be seen with a naked eyes. That's why they called as microbes, and they are also called as decomposers. Okay, why decomposers they are called? When the living bodies die, they generally derive their food from the dead and decaying parts. That's why they are called as decomposers. What is the decomposers here? Fungi and bacteria and most important microbes. ये सारे के सारे जितनी भी चीजें हैं, they are called as decomposers. Why? Because when the living beings, whether it is plants, चाहे animals या चाहे ह्यूमन बींग्स, जब भी डाई होंगे, मरेंगे, उनके बाद उनके बॉडी को डिकम्पोज करके खाने का काम जो है वो डिकम्पोजर्स करते हैं. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल पार्ट. ओके, सो फंजाई एंड बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स. अब फिजिकल फैक्टर्स में देखेंगे तो एयर, सॉइल एंड वाटर बॉडीज, all the things are generally makes our environment. Okay, without any of them is environment is not possible. So environment is a very important and very interesting things, and we should know about the environment is such a vast topic and we cannot understand environment in a single word. Okay, so we have discussed environment very clearly. Okay, I hope you all got the exact answers of environment, and this is your first homework. You have to give me the answers of what do you mean by environment in your own words and send me in my personal words. ठीक है, आपको अवर environment को अपने words में लिखकर मेरे personal WhatsApp में send करना है. Okay, now next we are going to discuss that the most important lithosphere and hydrosphere and atmosphere. What is the meaning of lithosphere, hydrosphere and atmosphere? Okay, so we know that we know that
This is the sphere surface of earth. In this solid crust layer which are found on the earth surface is called lithosphere. Solid crust portions are generally found in the earth, that is called lithosphere. And after that, hydrosphere. Hydro is a word which is related to water. Okay, hydro is a word which is related to water. Okay, so if after the hard surface which are found in the earth there is a water bodies is there. water bodies की बात करते हैं तो water bodies में जैसे lake आते हैं, water bodies में pond आते हैं, water bodies में seas आते हैं, बहुत सारे समुद्र पानी lake वगैरह आते हैं, and these water bodies are called hydrosphere. Okay, so देयर इज अ सरफेस ऑफ अर्थ, इसी को हम स्पेयर कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ सॉलिड क्रस्ट, यहाँ पे सॉलिड क्रस्ट होगा। सॉलिड क्रस्ट में बी लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड स्नोट, ठीक है। आफ्टर दिस सॉलिड देयर इज अ हाइड्रोस्फीयर, मींस देयर इज अ वाटर बॉडीज, यहाँ पे वाटर बॉडीज भी होंगी। वाटर बॉडीज में इंक्लूडिंग आपका लेक आएगा, आपका रिवर आएगा। दीज आर कॉल्ड द वाटर बॉडीज एंड दे आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। एंड आफ्टर द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर देयर इज अ अमाउंट ऑफ एयर इज फाउंड अराउंड द एयर, ठीक है। हमारे अराउंड द स्फीयर में हमारे एयर पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्लैंकेट ऑफ एयर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एटमॉस्फेयर, व्हिच इज एसेंशियल फॉर ऑल द थिंग्स, जो कि इनके लिए एसेंशियल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माय again my topic. Lithosphere is the solid parts of earth, and second hydrosphere is the water bodies which are found on the earth, and next atmosphere, the blanket of air which are found surrounding on the sphere are called atmosphere. Okay, and these three components are very important and very important topic for your board exams also, so you all have to clear very. Okay, now apart from that, these all make a sphere, and sphere we know that sphere is a shape of earth. So shape of earth means it is a geoid type. So many times we have studied in geography portion. So this is all about the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Okay, so apart from that, now next we are going to discuss that in our nature there is a different types of substance are there. Some may be good and some may be bad due to the environment and nature also provide lots of things for the human beings, for the animals and for the non living things also. Okay, depending upon the nature they are generally divided into two parts. The first is biotic and second is abiotic. Okay, so biotic and abiotic means क्या होते हैं, what is the difference between biotic and abiotic? So first important question is the living beings which are considered as plants, animals and humans are called as biotic component, and those who are generally die are non-living things are called abiotic components. जितने भी livings होते हैं comes in the class of biotic components, और जितने भी non-living components होते हैं that comes in the class of abiotic components. abiotic components की बात करते हैं तो यहाँ पे abiotic में हमारा टेम्परेचर आता है, पीएच आता है, ठीक है, वाटर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल आते हैं, एयर आते हैं, these are called the abiotic factor. And most important, abiotic factor is a very essential for the biotic factor because इसके बिना ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. If you are not providing the proper temperature, if you are not providing the proper water system, soil, air, so living beings and living environment will not be possible. So they make their own symbiotic relationship. इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशंस होते हैं ताकि ये इनके और ये इनसे जनरली यूज करके किसी चीजों को प्रिपेयर कर सके. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन आई एम टेलिंग यू, बायोटिक फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द living plants, living animals, living human beings are considered in biotic components. and abiotic में जितने भी non livings होते हैं, चाहे वो pH, pressure हो गया, temperature हो गया, water हो गया, soil हो गया या air हो गया, comes in the class of abiotic. Okay, so this is all about the biotic and abiotic. Next we are going to discuss that the types of waste. What is the meaning of types of waste? हम types of waste के बारे में क्या समझते हैं? Okay, so firstly types of waste are the most important factor. Types of waste is the most important factor. Why? Because in type of waste most of the environmental factors and most of the
nature factors are also there, and they all are very important to provide different types of substance to the environment and for the human beings also. That time our environment also produce some of the good things and some of the bad things, but when they produce bad things they are called as waste. जो भी चीजें होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसान होता है, दैट इज कॉल्ड द वेस्ट मटेरियल, और डिपेंडिंग अपॉन द वेस्ट मटेरियल फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इनको दो पार्ट्स में बांटा गया। सो मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिकम्पोजेबल मैनर। जो डिकम्पोज हो सकते हैं, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, उनके बेसिस पे टाइप्स ऑफ वेस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो वेस्ट है हमारा बायो, ओके, बायो डिग्रेडेबल, एंड सेकंड जो है हमारा नॉन बायो degradable. Okay, so the first important point is biodegradable and second most important point is non biodegradable. Okay, this is a short and you have to complete from your book also. It is a non biodegradable and it is a biodegradable. So types of waste is depending upon the two parts. First biodegradable and second is non biodegradable. Okay, what is the meaning of biodegradable? Biodegradable waste means those waste which are generally easily decomposable in the soil are called biodegradable. And most important, what is the meaning of non biodegradable? Those waste which cannot be easily decomposed with the with the soil are called non biodegradable waste. Okay, so again I am telling you biodegradable waste और non biodegradable waste में difference क्या होता है, ठीक है? So biodegradable waste means those waste which are easily decomposed in the soil by the action of microbes. ठीक है, किस action of microbes? Here कोई भी ऐसी चीजें लाइक सॉफ्ट चीजें जो जनरली सॉइल के साथ मिक्स हो जाए बाय द एक्शंस ऑफ माइक्रोब्स, by the actions of fungi, by the actions of bacteria, by the actions of microorganisms, they are called as biodegradable, क्योंकि ये डिकम्पोज हो गए। मोस्टली अगर हम बात करते हैं डिकम्पोज की तो यहाँ पे आते हैं हमारे वेजिटेबल्स पील्स, ठीक है? वेजिटेबल्स पील्स मतलब जो भी छिलके वगैरह होते हैं हमारे वेजिटेबल्स के, दैट कैन बी इजीली डिकम्पोज इन द सॉइल बाय द एक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ माइक्रोब्स। बट व्हेन द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक प्लास्टिक, लाइक मेटल्स, ओके, सो ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, दे आर आल्सो नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, व्हेन दे मिक्स विद द सॉइल द माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन टेक प्लेस ऑन देम बट दे आर नॉट डिकम्पोजेबल इन द सॉइल, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड इट इज द मोस्ट एंड हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, क्योंकि ये डिकम्पोज होते नहीं है और जब ये डिकम्पोज नहीं होंगे इट ऑल्सो क्रिएट सॉइल पॉल्यूशंस, ठीक है? ये सॉइल पॉल्यूशंस भी क्रिएट करेगा और प्लस हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म है चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, ये उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। सो दैट इज द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज जनरली डिकम्पोज एंड इट ऑल्सो यूज्ड एज अ कंपोस्टेबल, या हम उसे कंपोस्ट बना के या फिर मैन्योर बना के हम यूज कर सकते हैं, बट दीज थिंग्स आर जनरली नॉट डिकम्पोज इन द सॉइल, so that is a very harmful. So we have discussed types of waste very clearly and you have to revise all the things very carefully. Okay, now this is your second homework. You have to give me an answer of what is the meaning of biodegradable and non biodegradable waste. This is your second homework. Okay, so most important point is that what is the meaning of ecosystem? Actually we have completed types of waste, then ecosystem is a very important topic because first of all ecosystem is a word used by A.J. Tansley. Okay, he was the very great scientist, and ecosystem means all the reservoirs in which the livings means biotic and abiotic. Okay, most important, as I told you that when I am telling you the meaning of ecosystem. What is the meaning of ecosystem? Ecosystem means it is a reservoir of the components of biotic and abiotic which makes them life possible is called ecosystem. And ecosystem may be different types. Ecosystems अलग अलग हो सकते हैं, which may be ecosystem comes is the garden ecosystem हो सकता है but it is a artificial ecosystem, ठीक है? Forest ecosystem हो सकता है because forest में बहुत सारे animals survive करते हैं but it is a natural ecosystem क्योंकि forest इंसान नहीं बनाता है। Second, aquarium ecosystem is also because there is a small larva fishes is generally gets,
ओके, प्रॉपर हैबिटेट, क्योंकि वहां पे हम फिशेस को रखते हैं, छोटे मोटे लार्वास को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम, बट इट इज आर्टिफिशियल, ह्यूमन मैन मेड होते हैं, ठीक है। गार्डन होता है वो भी हमारा ह्यूमन मैन मेड होता है, जहां पे ह्यूमन बींग्स सरवाइव तो नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर गार्डन स्पेशल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे जितने भी बॉटेनिकल प्लांट्स हो गए, जूलॉजिकल जितने भी होते हैं सारी चीजें, जूलॉजिकल के लिए अलग बना है, बॉटनिकल के लिए अलग बना है, ये सब एक दूसरे के कंपोनेंट्स हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। अगर गार्डन है वहां पे एनिमल्स होंगे, वहां पे प्लांट्स होंगे, दे कैन इजिली सरवाइव एंड दैट इज कॉल्ड देयर ओन इकोसिस्टम, ये उनका इकोसिस्टम्स होता है, ठीक है। पॉन्ड का इकोसिस्टम्स अलग होता है, वहां पे फिशेस वगैरह होती हैं। एक्वेरियम का इकोसिस्टम अलग होता है, वहां पे एक्वेरियम में ओनली फिशेस या फिर स्मॉल लार्वा फिशेस जो होती है वो होती हैं, ठीक है। सो इकोसिस्टम मींस देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर व्हिच मेक्स देम लाइफ पॉसिबल एंड सस्टेनेबल, that is called ecosystem. First of all, ecosystem is derived by A.G. Tansley, was a great scientist and used ecosystem for completing the life cycle of biotic and abiotic, and they also told, most of the scientists also told that biotic and abiotic are both are get together to transfer and export, and most of the they do symbiotic relationship टू कंप्लीट ओन लाइफ साइकिल। ये बायोटिक फैक्टर्स जितने भी होते थे, जो लिविंग बींग्स होते थे, अबायोटिक के साथ अपना चीजों को शेयर करके और उन सारी चीजों को लेकर अपने लाइफ को और पॉसिबल बनाते थे। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोटिक एंड ऑल द सिस्टम्स इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम्स, ठीक है। सो अगेन आई एम समराइजिंग ऑल द टॉपिक। इकोसिस्टम इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with the study of different types of environment in which different types of human beings, different types of animals, different types of plants are survive, they are called as ecosystem। उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं ना। इकोसिस्टम में भी डिफरेंट टाइप्स इकोसिस्टम अलग हो सकते हैं, विच में भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, विच में भी नेचुरल इकोसिस्टम। अगर आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो गार्डन आते हैं, एक्वेरियम आते हैं। नेचुरल की बात करते हैं तो पॉन्ड आता है हमारा, ठीक है, जो पॉन्ड तालाब वगैरह होते हैं वो आते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं तो हमारा फॉरेस्ट आता है, फॉरेस्ट इज ऑल्सो इकोसिस्टम, क्योंकि फॉरेस्ट में एक अलग लाइफ साइकिल है, तालाब में एक अलग लाइफ साइकिल है, एक्वेरियम में एक अलग लाइफ साइकिल है। सो ऑल द लाइफ साइकिल्स आर जनरली डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम। हम उसी को इकोसिस्टम्स कहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम। Now, coming to the most important point, we are going to discuss that what is the meaning of various trophic level. We know that in our environment, sunlight plays a very important life, क्योंकि sunlight की जो radiations है वो generally जाएगी हमारे plants पे, ठीक है। So when the sunlight rays are generally falls on the plant, they do their own photosynthesis process and that time they produce food। okay, ये क्या करते हैं कि food को produce करते हैं। so these are called producers। इन्हें हम क्या कहते हैं? producers कहते हैं। why? because they are generally producing the different types of food elements। खाने के लिए ये किसी चीजों को बना रहे हैं, they are called producers। after that human beings and animals, ये इनको क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। ओके, सो आफ्टर द प्रोड्यूसर्स, यानी ये प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स किसी चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आफ्टर दैट ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स, दे जनरली डिराइव देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर। इनको हम एनिमल्स और ह्यूमंस को क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट एनिमल्स और ह्यूमंस जब डाई हो जाते हैं, जब ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो इनको भी खाने वाले कोई और आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स। ओके, सो डीकम्पोजर्स में जैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? डीकम्पोजर्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जिसमें भी फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे डीकम्पोजर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है एक सिस्टम होता है जिसमें एक प्रोड्यूसर्स होते हैं जो चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए। प्लांट्स इज जनरली प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स आल्सो। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स का काम कर रहा है। सेकंड, इन प्रोड्यूसर्स को खाने वाले कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं।
who consumers कौन, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, जनरली दे टेक देयर फूड पार्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स आल्सो, क्योंकि ये प्लांट से अपना खाना ले रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर, क्योंकि वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम मतलब खाना, ठीक है। आफ्टर दैट when the consumers die, decomposers is also available to decompose their body, ओके। सो डिकम्पोजर्स वहां होते हैं जो इनके बॉडी को डिकम्पोज करके खुद खाते हैं और अपना खाना खुद लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल, ये इनका ट्रॉफिक लेवल होता है, ओके। सो इन ट्रॉफिक लेवल वी विल आल्सो डिस्कस बाय एनर्जी फ्लो मेथड इन आफ्टर द क्लास, ओके। सो दिस इज इनफ फॉर ट्रॉफिक लेवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉफिक लेवल? आई एक्सप्लेन यू हियर। फर्स्ट प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड इज डिकम्पोजर्स। एक प्रोड्यूस करेगा, एक उसको खाएगा, कंज्यूम करेगा, और तीसरा जो है उसको डिकम्पोज करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। इट इज ऑल अबाउट द ट्रॉफिक लेवल, ओके। सो आफ्टर दैट we are going to discuss that what is the meaning of food web and food chain. So before starting the food web and food chain, we have to discuss that what is the meaning of food chain. We know that food chain means it is a sequence when small organisms are generally eaten by some greater organism in a sequentially manner are called food chain, okay। इसमें क्या होता है, जनरली एक स्मॉल पार्ट्स को एक बड़ा ऑर्गेनिज्म खाएगा, उससे उससे पावरफुल ऑर्गेनिज्म खाएगा, उसके बाद फिर उससे भी बड़ा पावरफुल ऑर्गेनिज्म खाते खाते एक चेन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। सपोज हियर आई हैव गिवन हियर एग्जांपल ग्रास है, वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रास को खाने वाले इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट को खाने वाले फ्रॉग हैं, फ्रॉग को खाने वाले स्नैक हैं, और स्नैक को खाने वाला हॉक है, ओके। सो दिस इज एक चेन बनते जा रहा है, वी कॉल ग्रास को इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नैक एंड स्नैक को हॉक। तो ये सारे एक दूसरे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते जा रहे हैं, ग्रास को ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, सो ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी फ्लो मेथड एंड इट इज आल्सो कॉल्ड फूड चेन। इसको हम फूड चेन कहते हैं, ओके। बट देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन फूड वेब। फूड वेब इज आल्सो सेम बट देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। यहाँ पे फूड वेब जो है ये फूड चेन के जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनकी एनर्जी फ्लो होती है इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज टेकन बाय सम मोर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो, क्योंकि इनको खाने वाले जरूरी नहीं कि ग्रास को खाने वाला सिर्फ इंसेक्ट ही होगा, या इंसेक्ट को खाने वाला सिर्फ फ्रॉग ही होगा, या फ्रॉग को खाने वाला स्नैक ही होगा, हो सकता है इनको खाने वाले कोई अदर ऑर्गेनिज्म और भी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, सो दैट इज कॉल्ड द फूड वेब। फूड वेब का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ क्रॉस रिलेशंस बिटवीन द एनी अदर ऑर्गेनिज्म एंड दे मेक्स लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब में जनरली क्या होता है कि ये फूड चेन से बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस होते हैं। फूड चेन में एक सीक्वेंस होता है कि ग्रास को इंसेक्ट खा रहा है तो इंसेक्ट ही खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है तो फ्रॉग ही खा रहा है, एक सिंगल चेन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फूड चेन। बट देयर इज अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जहां पे कॉम्पैक्ट या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाए जो एक ही चीज को खाने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड द फूड वेब। कमिंग टू द एग्जांपल से समझते हैं उसको। सो फर्स्ट देयर इज अ ग्रास, यहाँ पे ग्रास है, अब इस ग्रास को खाने वाला ग्रासहोपर भी होता है, ओके, ग्रासहोपर वी नो दैट, और उसी ग्रास को खाने वाले बर्ड्स भी होते हैं, और उसी ग्रास को खाने वाले इंसेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा ग्रास को खाने के लिए ओनली इंसेक्ट इज देयर, लेकिन यहाँ पे ग्रास को खाने वाले ग्रासहोपर्स भी होते हैं, जीएच आई हैव रिटन वेरी शॉर्ट फॉर्म, बर्ड्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को देखा था। अब ग्रासहोपर्स को खाने वाले बर्ड्स भी होते हैं, बर्ड्स को खाने वाले अलग अलग बहुत सारे स्नैक्स वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पे जो एक चीजों को खाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे 3 से 4 एनिमल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल, इस ग्रास को खाने के लिए रैबिट भी अवेलेबल है, इसी ग्रास को खाने के लिए डियर भी अवेलेबल है, ठीक है। इस डियर को खाने के लिए टाइगर अवेलेबल है, ठीक है, या इस टाइगर को खाने के लिए लॉयर, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। सो डियर को खाने के लिए टाइगर है, डियर को खाने के लिए और भी बहुत सारे वॉल्फ वगैरह भी हो सकते हैं। सो जरूरी नहीं कि डियर को खाने वाला सिर्फ टाइगर होगा या ग्रास को खाने वाला रैबिट होगा। सो दिस इज व्हेन देयर इज अ सेवरल एंड मोर एनिमल्स आर देयर इन आवर एनवायरनमेंट टू ईट सेवरल टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड मटेरियल इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दे आर कॉल्ड एज फूड वेब। फूड वेब में एक फूड वेब का चैन बनता है जो कि फूड वेब कहलाता है, जिसमें एक एनिमल्स या एक किसी भी चीज को खाने के लिए देयर इज अ लॉट्स ऑफ एनिमल्स इज देयर, दैट इज कॉल्ड फूड वेब। बट इफ the animals are generally available in a single form,
दे आर कॉल्ड फूड चेन. ठीक है, एक सिंगल चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड चेन. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे क्लास. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल आल्सो डिस्कस consumers, primary consumers, secondary consumers and tertiary consumer. So after the completion of class, this is your first homework. You have to write down the meaning of food chain and food web and with examples also, and send me your copy in my personal WhatsApp. Till then, whatever I have taught you, you all have to revise very carefully because it is a very interesting and important chapter. Till then, okay, thank you, students.